Hi and good morning to the Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad. I am very glad that you are watching this extraordinary awesome video. And in this video we are talking about lenses. This is lecture number 4 and today we are talking about our very beautiful eyes. तो जानते हैं हमारे जो आईज है उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और एक डिफेक्ट ऐसा कि मतलब सब डिफेक्ट देखेंगे लेकिन इस वीडियो में हम एक डिफेक्ट देखेंगे जिसके कारण स्कूल्स में बहुत सारे बच्चों को स्पेक्ट्स लगते हैं। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट वो भी हम जानेंगे। तो चलो समझते हैं कि ह्यूमन आई एंड इट्स वर्किंग ऑफ lens, especially is working of all those part of the human eye कैसे होता है इसको समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि ये जो आई है E-I-E-Y-E आई हैज अ आउटर थीन मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने? आउटर थीन मेम्ब्रेन या आउटर थीन कवरिंग। It's called as a cornea, C-O-R-N-E-A. The outer thin membrane. Is it transparent? Of course it is transparent. So transparent outer thin covering of or outer thin membrane of eye या human eye is called cornea. What's the function of it? Its function is to refract the maximum ray of light entering the eye. Its function is to refract the maximum ray of light entering the eye. What's the function is? To refract the maximum ray of light entering the eye. What is the function of cornea? To refract the maximum ray of light entering into the eye. Got it? Good. अभी हम बात करेंगे यहाँ कॉर्निया समझ आ गया आपको? व्हाट्स द कॉर्निया इज? इट्स अ आउटर थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। थीन ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग और आउटर मेम्ब्रेन इट्स कॉर्निया। व्हाट्स द फंक्शन? टू रिफ्रैक्ट द मैक्सिमम रे ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। यू कैन ऑब्जर्व द आईज। ओके, एंड व्हाट्स द आइरिस? Iris is the muscular diaphragm. What that I talked about? The iris is a fleshy screen. What you can say that the fleshy screen, dark fleshy screen. It's also called as a muscular diaphragm. Where is it? It is behind the cornea. Behind the cornea, a fleshy screen or dark screen, or you can say that the muscular diaphragm behind the cornea is is a iris. Okay, color, its color is different for different people. आपको पता है वो आधार कार्ड जो आधार कार्ड के लिए जो आप अंदर रखते हैं और आपके आइरिस के क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, तो वो भी वहाँ आधार कार्ड के उस नंबर के अकॉर्डिंग सेव की जाती है ताकि आपको पहचाना जाए। ओके, गॉट इट। ओके, जैसे आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, आपको फिंगरप्रिंटिंग भी आपको साइंस 2 में सीखने को मिलेगा, शायद लास्ट ईयर में आपने सीखा है, ये बराबर है। ओके, तो ऐसा ही हमारे आइरिस आइडेंटिकली डिफरेंट होते हैं। ओके, तो इट्स कलर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। एंड व्हाट्स द फंक्शन इज? इट्स फंक्शन इज, बहुत सारे लोगों को इसका फंक्शन क्या ये पता नहीं होता है। तो इट्स फंक्शन इज कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। सर ये प्यूपिल क्या है? बताता हूँ, रुको। पहले आप समझ लीजिए कि व्हाट इज आइरिस। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया इज अ आइरिस एंड इट हैज डिफरेंट कलर for different people. And what is the function of the iris is just a minute. Okay, to control the size of, this is iris. Okay, to control the size of pupil. What the pupil is? A small opening of variable diameter.
small opening of variable diameter. It's just like a hole. Okay, a small opening of variable diameter at the center of iris. It's called as a pupil. What the pupil is? What the pupil is? Sir, हमें कहाँ दिखाई देंगे pupil? आप एक काम करो, किसी को आपके घर में अभी तुम्हारा भाई बहन मम्मी पापा हो, उनको सामने बिठाओ, ओके, और उनके आंखों में देखो. आप जहाँ दिखोगे अंदर, आपको आप खुद देखोगे इस आँख में, इस आँख में, वो जो अंदर जहाँ दिखाई देंगे ना आपको, ओके, वेयर यू कैन फाइंड योर सेल्फ इनसाइड द आई ऑफ योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, व्हाटएवर. ओके, सो दैट इज व्हाट द pupil is. So pupil is what? A small opening of variable diameter, small opening of variable diameter at the center of iris is called as a pupil. And what's the function of the pupil? The function of the pupil to control the amount of light entering the eye. What I talked about? To control the amount of light entering the eye. If suppose the light falling on the eye is bright, the pupil contract, and when the light falling on the eye is dim, the pupil dilate. क्या बोला मैंने? When the bright light is there, pupil contract, and when there is a dim light, pupil dilate. This ability of pupil to adjust its opening for variable, क्या बोला? Okay. This ability of pupil to adjust its opening for various light intensity, is called as adaptation of that pupil. इसको हम क्या बोलते हैं? Adaptation बोलते हैं. Understand this carefully. It's very very simple. Okay, so small opening of variable diameter at the center of iris, there is a pupil. Oh, good. What's the function? It controls the amount of light entering the eye. What its function is? To control the amount of light entering the eye. Next is what that? It's a means when there is a bright light, it contract, and when there is a dim light, it dilate. It means that it has the ability to adjust its opening for various light intensity. It's called as a adaptation. Okay. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यूपिल के पीछे होती है लेंस, अ बाइकॉन्वेक्स लेंस. सी, सो देयर इज अ डबल कॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स यानी डबल कॉन्वेक्स, दोनों साइड से कॉन्वेक्स, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन बॉडी कॉल्ड एज अ लेंस. इट इज जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल, just behind the pupil, it's just behind the pupil, the transparent biconvex crystalline body. Behind the pupil, the transparent crystalline body, behind the pupil, the transparent crystalline body, or you can say that biconvex transparent crystalline body is called as a lens, and it is the lens which contract or converge the ray of light, so that the image can form on the retina. Got it? This is the function of the lens. So lens provides a small adjustment of focal length to focus the image on the retina. This lens creates a real and inverted image of the object on the screen, and that screen is nothing but called as a retina. क्या रेटिना है? तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ रेटिना. ये क्या है? ये पार्ट जो कहलाता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं. अभी तक हमने क्या देखा? दिस इज अ कॉर्निया, अ ट्रांसपेरेंट, a thin transparent outer covering. Okay, behind the cornea there is what? Iris. Iris has a different color for different people. At the center of iris there is a pupil, and behind the pupil there is a lens, biconvex lens, and ray of light when enter here, due to this they contract, and what happen? The image is formed there. What image is formed there? Got it? What formed there? Image is formed there. Where the image is formed? Image is formed on the retina for normal eye. Normal eye यानी जिसके आँखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, उस आईज में इमेज कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना में फॉर्म होती है.
और फिर रेटिना क्या करता है, रेटिना क्रिएट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देन passes towards the occipital part of the brain where the senses are perceived and image is seen, and you can see the object like you are observing me in the mobile and you are watching with enjoyment. Got it? Okay, so बहुत सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल है. What is the lens? Lens is a double यानी biconvex crystalline body just behind the pupil. Biconvex crystalline body just behind the pupil is a lens. Okay, what is the function of the lens? Very simple. To adjust its focal length for various object distances to form the sharp image on the retina, means screen. Got it? Good. So next, what is the retina? Oh, we are talking here about retina. So what the retina is? Retina is a light sensitive screen. It's a light sensitive screen. When the ray of light fall, जैसे देखो, when the ray of light fall and it converge and here the senses created. Got it? Okay, and then sense are passing towards the brain in occipital part. I will show you video as well. So what we talked here, the screen is made up of light sensitive cell. It's called as a retina. The cell on that retina excited on illumination. जैसे उसके ऊपर लाइट गिरता है तो वो क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं, and create electrical signals. These signals are conveyed to the brain through optic nerve. What the nerve? Optic nerve. समझ लीजिए, आंखों से जाने वाली नर्व को ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, कानों से जाने वाली नर्व को क्या बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व बोलते हैं. गॉट इट? ओके, तो यहाँ later the brain analyze the signals and convert them in such a way that we can perceive the object as actually means as they actually are. जिस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, जैसे आज मुझे आप देख रहे हो या मोबाइल को देख रहे हो, whatever that is, it's an object for your eyes and I means your brain, and you can observe and perceive. समझ आ गया है? गुड. तो आपको वही दिखता है जो आपके ब्रेन में ऑलरेडी है, जो नहीं है वो आपको दिखता नहीं है, और दिखता भी है तो आप उसको पहचान नहीं पाते हो. समझ आ गया है? गुड. सो व्हाट इज द रेटिना यू गॉट हियर? रेटिना इज अ स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल. ओके, द स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल. Next, these cells get excited when light fall on them and generate electrical signals. Then where these electrical signal goes? These electrical signals are passing towards the brain, are conveyed towards the brain via optic nerve, and then brain analyze the signal and perceive the image as they are. आया समझ में? इसको जरा ध्यान से देखते हैं. That takes in light and translates it into images. If we enlarge the eye and look inside it, we can discover how that's done. Inside the eye are various structures working together to create an image the brain can understand. Among these are the cornea, a clear dome-like structure covering the iris or colored part of the eye, the lens directly below it, and the retina, which lines the back of the eye. The retina consists of thin layers of light-sensitive tissue. This candle can help us understand how the eye captures images and then sends them to the brain. First, the candlelight passes through the cornea. As it does, it's bent or refracted onto the lens. As the light passes through the lens, it's bent a second time. Finally, it arrives at the retina, where an image is formed. This double bending, though, has reversed the image and turned it upside down. If that was the end of the story, the world would always appear upside down.
Fortunately, this is the real and image inverted turns image, and now in the brain. it is passing towards the brain. Before that can happen, the image needs to travel as impulses along the optic nerve and enter the brain's occipital lobe. When the image forms there, it regains its proper perspective. So you got here what happened actually when the object is seen by the eyes. Actually object is seen by the brain. Eyes has the function to pass the ray of light from that particular object, convert it in the retina. Retina converts that ray of light into electrical impulses, and then electrical impulses passes or conveyed towards the brain via optic nerve. Then brain perceive it, observe, and we can observe the image. As we can understand, we are observing through the eyes only, but actually the brain itself creates a exact image. आया समझ में? As they are. So we are talking here about power of accommodation. What this power of accommodation is? क्या है ये power of accommodation? देखो कि when you are viewing the nearby object, the eye lens become thick, decreasing the focal length. And when we are viewing the distant object, eye lens become thin, increasing the focal length. क्या बोला? मैं फिर से ध्यान दे रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ आपको कि while seeing the object at infinite distance, बहुत दूर का object यदि हम देख रहे हैं, तो in that case the lens become flat, thin. Lens become flat या thin. Lens कैसी बनती है? Thin बनती है. How the lens will be? Lens will be thin. And as the lens will be thin and its focal length increases, when we are viewing the distant object, eye lens become thin, increasing the focal length. At the same time, when we are viewing the nearby object, the eye lens become thick. Eye lens कैसी बनती है? Rounded या हम बोलते हैं thick. And its focal length decreases. This way we can observe, or we can see the objects at any place, either the nearby object or the distant object. Once again repeat, when we are viewing the distant object, eye lens become thin, increasing the focal length. Image of the distant object form on the retina. When we are viewing the nearby object, the eye lens become thick. When we are viewing the nearby object, the eye lens become thick, decreasing the focal length. Image of the nearby object form on the retina. This ability or capacity of the lens to adjust its focal length to obtain a clear image, जो इमेज जो है उसको क्लियर ऑब्टेन करने के लिए जो आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, इस एबिलिटी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं. व्हाट इज कॉल्ड एज अ पावर ऑफ एकोमोडेशन. व्हाट द पावर ऑफ एकोमोडेशन? when we are viewing the nearby object, eye lens become thick. Eye lens become thick. When we are viewing the nearby object, once again, when we are viewing the nearby object, eye lens become thick. In which condition? When we are viewing the nearby object and focal length decreases. But when we are viewing the distant object, eye lens become thin, increasing the focal length, decreasing the focal length. ओके यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ यहाँ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रही है. समझ रहे हैं? सो दिस एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस इज कॉल्ड एज अ पावर ऑफ एकोमोडेशन. आया समझ में? गुड. तो ध्यान से देखिए इसको. लेकिन ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, ये एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाता है. it does not go beyond particular limit. Means the
पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड हम देख नहीं पाते। जैसे कि यू कैन से दैट कि मैं ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये इतना नज़दीक पकड़ूं तो हम उसको पूरा देख नहीं पाते। तो सर कौन से डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? तो हम जिस डिस्टेंस पे देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट को, उसको हम नियर पॉइंट बोलते हैं या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस, क्या बोला मैंने? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच नॉर्मल आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच normal I can see the object clearly and distinctly without any strain on the eye is called as a least distance of distinct vision. ठीक है? So the minimum distance of object from a normal eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called as a minimum distance of distinct vision. The position of object, okay, means for normal eye, the position of object at a minimum distance for normal eye is what? 25 centimeter. How much it is? 25. ये कितना सेंटीमीटर पे होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर के नज़दीक यानी बीच में ऑब्जेक्ट आ गया तो यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। है समझ में? सर व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, the minimum distance at which normal eye can see the object clearly and distinctly, clearly and distinctly. Next हम बात करेंगे यहाँ farthest distance of distinct vision. क्या बोला मैंने? farthest यानी दूर तक। तो what we talked about? The farthest distance of object from human eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called as the farthest distance of distinct vision and it is about at infinity. ये कहाँ तक होता है? Infinity तक होता है। So the position of the object at this distance is called as a far point of the eye और उधर क्या होता है? It is a near point of eye. But it is called as a near point. The position of the object at which the means it is called as a near point. It is called as a near point of the eye. For normal human being it is 25 centimeter and in the another case we are here talking about the farthest distance of distinct vision and the position of object at this distance is called as a far point of the eye and it is at the infinity. ये कहाँ होता है? infinity में। आपको दोनों समझ में आ गया? least distance of distinct vision क्या है? least distance the minimum distance at which normal eye can see the object clearly and distinctly without any strain or stress on the eye is called as a near point or the least distance of distinct vision. Farthest distance of distinct vision, the farthest distance at which normal eye can see the object clearly, distinctly without any stress on the eye is called as the farthest distance of distinct vision and it is at infinity for normal eye. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें कि जो आपको पता है क्या? तो आई बॉल जो होता है इट्स अप्रॉक्सीमेटली स्फीयरिकल एंड हैज़ अ डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.4 सेंटीमीटर। ओके, वर्किंग ऑफ द लेंस इन ह्यूमन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब वर्किंग ऑफ लेंस का वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। यदि लेंस का वर्किंग नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए कुछ ऑपरेशंस वगैरह करने पड़ते हैं या स्पेक्टाकल लगाने पड़ते। क्या लगाने पड़ते? बोलो स्पेक्टाकल। पहले तो स्पेक्टाकल लगा, डायरेक्ट जाके ऑपरेशन नहीं करते बेटा। ओके, सो लेंस कैन बी चेंज इट्स फोकल लेंथ टू एडजस्ट एंड सी द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। इन रिलैक्स स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आई इज 2 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आई एंड अदर फोकस पॉइंट इज ऑन द रेटिना। अदर फोकस पॉइंट कहाँ होता है? रेटिना पे होता है। इतना आपके दिमाग में सेट होना जरूरी है। डू यू नो, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। इधर ध्यान से देखते फिर से कि आईबॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल एंड हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.4 सेंटीमीटर। सो द वर्किंग ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई इज एक्सट्रीमली important. Very important is that
कि lens can change its focal length and adjust the various distances that you already know about. Relaxed state, the focal length of healthy eye is 2 cm. The other focus of the eye is on the retina. Now we are talking here about the various defect on of vision and their corrections. मतलब हमारी आँखों में कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता, कुछ लोगों को नज़दीक का नहीं दिखता, कुछ लोगों को दोनों जगह का नहीं दिखता है. क्या आपको पता है इसके बारे में? गुड. तो आपके क्लास में जब आप क्लास शुरू होगा तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे बच्चों को, शायद आपको भी होगा, यदि आप देख रहे हो देख रहे हो तो मतलब क्या बोला मैं, समझा आपको? सब लोग देख रहे हैं लेकिन कुछ लोग स्पेक्टाकल से देख रहे हैं. तो some people cannot see things clearly due to loss of accommodation power, okay, and of the lens and their eyes, means of the lens of their eyes, and because of the defective refraction by the lens, their vision becomes faint and fuzzy. And in general there are 3 types of refraction defects. नियर साइटेडनेस, इसको हम मायोपिया बोलते हैं, फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और प्रेस बायोपिया. अक्सर हम अभी आज के वीडियो में बस इतना ही कवर करेंगे, नियर साइटेडनेस और मायोपिया. सर ये नियर साइटेडनेस क्या होता है? मैं आपको बता दूं नियर साइटेडनेस क्या होता है. नियर साइटेडनेस का मतलब है कि द पर्सन हु कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. क्या बोला मैंने? नियर साइटेडनेस बोला. नियर साइटेडनेस में क्या बोला? द पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. नियर साइटेडनेस. मायोपिया, मायोपिया दूर का नहीं दिखता है, मायोपिया दूर का नहीं दिखता है, मायोपिया डिस्ट, मायोपिया नियर डिस्ट, नियर साइटेडनेस, distant object cannot be seen clearly. Why this happen? Because image of the distant object form in front of the retina instead of on the retina. नियर साइटेडनेस में ये जो दूर के ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ये इमेज यही गिर गई है, यहाँ होनी चाहिए थी लेकिन नहीं, यहाँ आ गई वो. तो दिस इज व्हाट दैट्स व्हाई द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. इसी कारण पर्सन ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहा है. इमेज कहाँ होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए, लेकिन कहाँ हो रही है? यही को क्लोज कर रहा है, मतलब यही इमेज फॉर्म हो रही है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन द रेटिना. रेटिना पे होनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही है रेटिना पे ऊपर. क्यों नहीं मिल रही है? किसकी नहीं मिल रही है? दूर वाले ऑब्जेक्ट की नहीं मिल रही है. क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज ऑफ हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस. बिकॉज ऑफ व्हाट? हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस. ये हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस क्यों हो गया भाई? कि सिलियरी मसल्स जो लेंस को कंट्रोल करने वाले जो मसल्स है, क्या नाम है उसका बोलो? सिलियरी मसल्स. they do not relax sufficiently. What do not relax sufficiently? Ciliary muscles do not relax sufficiently. What do not relax sufficiently? Ciliary muscles do not relax sufficiently. That's why high converging power of lens. और क्या हो रहा है सर? The distance between lens and retina increases. This is the reason. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ? In this case the eye can see nearby object clearly but distant object cannot be seen clearly. Okay, this means that the far point of the eye is not at infinity but shift closer to the eye. In nearsightedness, the image of the distant object forms in front of the retina instead of on the retina. So there are two reasons behind the defect. I already told you about कि सबसे पहला जो डिफेक्ट मैंने आपको बोल दिया है, सबसे पहला जो रीज़न मैंने आपको बोल दिया है कि ये नॉर्मल आई है, इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है. अभी इसकी इमेज यही फॉर्म हो रही है, तो इसकी इमेज यहाँ क्यों फॉर्म हो रही है? ये मायोपिया की. व्हाट्स द रीज़न? आई टोल्ड यू, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस. बस ध्यान देना क्या कि हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस इज हाई. ओके. दूसरा कि द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस. द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस. Why इंक्रीजेस? उसके पीछे का रीज़न है कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल. क्या बोला मैंने? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल. ओके सर, ये कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको हम लेंगदन आई बॉल बोलते हैं. ओके, तो इसको समझने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, LC, यानी लेंगदन आई बॉल लेंस कर्व्ड.
लेंथन आईबॉल लेंस कर्व, ओपिया मायोपिया ले एलसी, क्या बोला, ओपिया मायोपिया ले एलसी, ले एलसी का मतलब है लेंथन आईबॉल लेंस कर्व, लेंथन आईबॉल and lens curve, that's why the distance between retina and eye lens increases. अब यहाँ ये elongation of eyeball ये लिखा है, बस हम इधर और एक डिटेल में लिखते हैं lengthen eyeball and lens curved, that's why the distance between the retina and lens increases. Okay, got it. Distance between retina and eye lens increases because of lengthen eyeball and lens curve. And high converging power of lens is why? Because of ciliary muscle do not relax sufficiently. Ciliary muscles do not relax sufficiently. दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस. अभी कॉनकेव लेंस क्यों सर, कॉनकेव लेंस क्यों इस्तेमाल करेंगे, जरा बताओ ना. एक बात बताओ कि रे ऑफ लाइट, लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. रे ऑफ लाइट ज्यादा कन्वर्ज हो रहे और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के ऊपर नहीं जा रही है. यानी क्या ज्यादा हो रहा है, कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है. तो कन्वर्जेंस तो अभी वो लेंस है तो उसका कन्वर्जेंस होगा ही. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको पहले ही आई लेंस के ऊपर फॉल होने से पहले, यानी कॉर्निया के ऊपर फॉल होने से पहले उसका थोड़ा सा डाइवर्जन करना पड़ेगा. तो डाइवर्जेंस के लिए हम कौन सी लेंस इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस. जी हाँ, करेक्ट. और वो डाइवर्जिंग लेंस कौन सी है, इट्स अ कॉनकेव लेंस. Concave lens is a diverging lens. So when ray of light entering into the concave lens, it diverge, and then when falling on the lens, it converge and the image is formed on the retina. So this was the simple correction. Got it? Okay. और आपको पता है power of lens, degree of divergence and convergence of lens is called as a power of lens. जो हम lens इस्तेमाल करते हैं ना spectacle में, तो it's a degree of divergence and convergence of lens is called as a power of lens. Okay, so the lens diverges the incident ray and these diverged ray can be converged by the lens in the eye to form an image on the retina and we can see the distant object clearly. और हम बोलते हैं डॉक्टर को, हाँ इस स्पेक्ट से मुझे अच्छा दिखता है. ओके, कभी आप गए हो डॉक्टर के पास आइज के लिए, उनको ये पता है जो मैं बोल रहा हूँ. देखो ये स्पेक्टाकल लगा दिया तो इन्होंने पहले से इधर क्या कर दिया, इसको वाइडन कर दिया, यानी कन्वर्ज डाइवर्ज कर दिया और फिर वो बाद में फिर कन्वर्ज होके रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म हो गई. पहले इमेज यहाँ फॉर्म होती थी, अब देख रहे हैं यहाँ इमेज फॉर्म होती थी. अभी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, जहाँ होनी चाहिए, रेटिना के ऊपर. समझ आ गया है? गुड. सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट. ओके, सो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव. Focal length of concave lens is what? Negative. And so the lens with a negative power is required for correcting the nearsightedness. Nearsightedness को correct करने के लिए क्या करने की जरूरत होती है, क्या करने की जरूरत होती है, तो negative power of lens का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है. अभी आप जब किसी हॉस्पिटल में जाते हो, यानी किसी आई क्लिनिक में जाते हो, तो वहाँ जो डॉक्टर आपको चेक करते हैं तो आपको नंबर देते हैं. यदि आपको निगेटिव नंबर है तो समझ लेना हर एक को अलग अलग नंबर होता है, क्योंकि हर एक को अलग अलग डिस्टेंस का नहीं दिखता है, अलग अलग लेवल पे कन्वर्जिंग पावर कम ज़्यादा होती हैं, तो उस समय डॉक्टर अलग अलग नंबर देते हैं और इसी कारण अलग अलग स्पेक्टाकल लगते हैं. आपको आया समझ में? नहीं तो एक स्पेक्टाकल लाया सबको चल जाता था, ऐसा नहीं है. ओके, तो ये निगेटिव लेंस का मतलब क्या है, यदि आपको क्वेश्चन आ गया इट्स अ निगेटिव लेंस या पावर ऑफ लेंस इज निगेटिव, इसका मतलब है कि द पर्सन हैज अ डिफेक्ट ऑफ मायोपिया, पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. इसको ध्यान में रखना जरूरी है. तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि प्लीज़ हम जल्दी ही आपके लिए कुछ अलग चीज़ें लेके आ रहे हैं हमारे नए चैनल में स्टूडेंट कोच सुभाष गायकवाड़ में. आप जरूर सब्सक्राइब करना इफ़ यू आर न्यू फॉर दिस चैनल एज वेल. थैंक यू. बाय बाय.